Good afternoon, students. I'm sorry for starting the meeting 10 minutes late, but now we will continue. I'll add the participants as and they are joining. Give me a minute to share the photo, and then we'll soon start with the new topic for today. Is the screen visible to you, students? Students react. Is the screen visible to you, people? Class, students, kindly react. Since there are not many of you today, students, is the screen visible? Yes, miss, the screen is visible. Okay, great. So we can start for today. So the new topic we'll be doing today is understanding the quality management and corporate governance in the business, assessing the management and corporate governance in the business, how that works and how that will help to grow the business. What is corporate governance, why is it important, and what are who are the people involved in maintaining corporate governance. So over here, there are these 4 5 steps they've given. First, we'll start with the meaning of the words and then look into the picture in detail. So what is corporate governance, or what is Okay, students. So, starting with the meaning of the word corporate governance, when the word governance is used, understand that it is regarding following. Okay, now guidance is provided, governance is done. Corporate, in the sense, when you are talking about governing a corporate sector, companies and businesses, so that is corporate. Governance is running of the business, and over here, I'm not talking about legal regulations. Okay, understand that we are not talking about legal regulations, we are talking about rules and practices and process that controls the company, in which the interest of all the stakeholders. Now who are the stakeholders? Like may it be shareholders, may it be management, उन सब stakeholders का interest is taken care of. सबको proper running, smooth running in the business, when all the stakeholders, may it be the employees, may it be the customers, may it be the shareholders, may it be the government, may it be the society, all these are stakeholders of business. When all these stakeholders of business are taken care of, इन सबके interest का ध्यान दिया जाता है, everyone is satisfied with the working, at that point it is known that the company is having good governance. Okay, that is known as having good governance. What are the principles? What Now how will a risk
corporate governance, a good corporate governance exists in the business when following things work properly. What are these following things? The leadership and experience, board of directors, the transparency and disclosure policies are proper, the executive compensation, risk management. When all these things are working properly, तब जाके आप बोल सकते हो कि किसी कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज गुड. एंड व्हाई इज गुड अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस important to ensure smooth running of the business in the long term, to ensure that there is no problem in uh, having taking decisions. There is no exploitation of a particular party in the business. आप किसी को exploit नहीं कर रहे हो. Everybody is working in a good corporate environment. That is only possible when the company has good policies, good decision, good I'll say execution of these policies. Many a times there are policies existing, but उनका execution proper नहीं होता है. So what happens is this good corporate governance will is something which will give you show a long term effect. आपके business में long term effect दिखता है इस good corporate governance का. Let me ask students in the meeting room. Okay. So, adding these qualities of good corporate governance, what will it do? It will help you to understand that the company is working in a good environment, and thus it will give you long term effect or long term value. जो आपकी overall value है वो increase हो जाती है. Now we'll go one by one looking into detail of each of the picture. जैसे आपका पहला अगर मैंने बात की, what exactly is assessing management and corporate governance. Now the quality of an issuer's management team and the effectiveness of its corporate governance plays a important role. उसकी जो credit rating होती है companies की, वो credit rating में ये सब चीजें check होती है कि how is the management working, how is the पीपल इन द मैनेजमेंट, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बेसिकली वो कैसा है ट्रैक रिकॉर्ड. what are the things which are evaluated to the things like marketing management team कैसी है उनकी, उनका corporate governance structure कैसा है, उनका working environment कैसा है. all these things are taken into consideration. What is the previous track record, what are the risk management uh, practices, what how are the board of directors working, then what are the ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर पॉलिसी. अगर कल को कोई डिसीजन हो रहा है तो उसमें क्या एम्प्लॉयज रिलेटेड डिसीजंस है, सो आर द एम्प्लॉयज टेकन इनटू कंसिडरेशन, इज देयर वॉइस हर्ड. ओके, इफ एनी पर्टिकुलर डिसीजन इज बीइंग टेकन, वहाँ पे लीडरशिप कैसी है, इन सब चीजों को देखना, उसको स्टडी करना, उसको असेस करना, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को चेक कर सकते हो. Okay, now we can look into detail of each of the topic. It is crucial understanding the company's management will help you to understand the working culture, which in turn will help you to understand कि उनका जो decision making होता है वो कौन से basis पे होता है. That will help you to understand long term financial stability. A company with no good governance, no good management will collapse in the future. That is for sure. क्योंकि उनका जो डिसीजन मेकिंग का तरीका होगा, उन सब चीज़ों से लॉन्ग टर्म में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इफ इट इज़ नॉट गुड. सो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, वो फिनेंशियल हो, सक्सेस हो, वो आपको कैसे मिलेगा, ओनली इफ अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज फॉलोड.
So going with the first one, that is leadership and experience. Now, what is leadership and experience? Understand that a strong management team with experienced leaders, where the leadership are the leaders who are running the business, those leaders are experienced in every sector. They have a track record of making effective business decisions, on point business decisions, timely business decision, recognizing of risk, recognizing and of course adapting to those risk. जो चेंज होने वाला है उस चेंज को पहले से स्टडी कर पाना, उस चेंज के वजह से जो भी आपको चेंजेस या डिसीजन मेकिंग होंगी उनको पहले से लेना, ताकि आप अपने बिजनेस की वैल्यूएशन, उनके शेयर होल्डिंग्स को प्रोटेक्ट कर सको. दैट इज अ प्रॉपर लीडरशिप. अगर लीडरशिप स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि अंडरस्टैंड दैट एग्जीक्यूटिव, नॉट ऑल एग्जीक्यूटिव्स में बी स्मार्ट इनफ टू टेक डिसीजंस, नॉट एवरीबडी इज अ गुड लीडर. सो व्हेन यू आर गिविंग पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन इन सर्टन हैंड्स, it is to be ensured that those people are capable enough to handle that power. उनका जो critical analysis का thinking है, वो जो decisions लेते हैं, are they biased, are they not biased, are they knowledgeable enough to take those decisions. All these things matter, because a leader can lead the whole business into wrong direction. वो पूरे business को wrong direction में क्या कर सकता है, divert कर सकता है. So इसीलिए it is important that the leadership and experience, the top management, the top level command of the business is always smart and experienced and has good qualities to make business decisions. Are people understanding? That is, thus the leader is supposed to be very vigilant while taking decisions. The next is board of directors. Understand that when we are talking about companies and business, there's a difference between the board of directors and the shareholders. Of course, the shareholders are involved in decision making, but board of directors play a very important role. All the decisions are supposed to be approved by board of directors as well, and vice versa. दोनों ही पार्टीज, शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. बस फर्क इतना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉट ओनर्स, दे वर्क फॉर सैलरी रेदर देन वर्किंग फॉर प्रॉफिट्स. ओनर्स किस में हक होता है, उनका प्रॉफिट दे जो प्रॉफिट शेयरिंग में होते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डू नॉट रियली शेयर प्रॉफिट. So what is the importance of board of directors in corporate governance, maintaining corporate governance? So understand the composition and independence of board of directors plays an important role. एक जो कंपनी के ओनर्स है, वो जरूरी नहीं है कि उनका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है that will be in all fields. When a company is supposed to be run, there is marketing to be done, there is production to be done, there are legal rules and regulations which are to be followed, there are services which are supposed to be offered, there is logistic involved. So all these different components, it is not necessary that every the owner will have all this expertise. So ensuring that the board of directors includes people with from different fields having all these expertise knowledge, because only then whenever a particular decision is taken, all the aspects of the business will come into picture. हो सकता है कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो किसी प्रोडक्शन वालों को नहीं पता हो, उसने तो प्रोडक्ट डिजाइन किया, बट हो सकता है कोई मार्केटिंग का इंसान आके उस पर पिन पॉइंट कर सकता है कि दिस इज द प्रॉब्लम इफ एंड दिस विल हैम्पर अवर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. So it is important that the board of directors are independent and they take into picture all the aspects of the business because of their expertise. Also, since they are accountable for decision, they should are looking after all the stakeholders involved. वो सोसाइटी का भी ध्यान रख रहे हैं कि the business is not creating harm for the society. वो legal regulations का भी ध्यान रख रहे हैं, and thus a proper decision is making which will help the business to grow in the long term. And in board of directors there are owners, but there are also independent directors. We will study role of independent directors also in detail later on. Who are independent directors, we'll also study the term as well. The next is transparency and disclosure. Of course, transparency is important to ensure the decision making.
एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्शन हो, कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन हो, इन सब चीज़ों के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट देर इज ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस, ट्रांसपेरेंसी related to decision making, transparency related to profit, what is generated, transparency for government, see transparency सिर्फ बिजनेस के अंदर या इंटरनल मैनेजमेंट में नहीं होती है, ऑल्दो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ऑल अबाउट इंटरनल मैनेजमेंट, बट देन अगेन उसका जो इफेक्ट होता है वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स पे भी आता है, द मैनेजमेंट में भी इंटरनल, बट द ओवरऑल इफेक्ट इज ऑन एक्सटर्नल एज वेल. So, transparency like financial reporting and timely disclosure of material information. Now, what is material information? Important information which is essential for investors to make decisions. There are events when a company or a business is doing something new. ना events announced होते हैं, public listed company बोलते हैं उसका कोई तो event है. Event है मतलब वहाँ पे वो important जो decisions which are happening in the business, they will disclose it to the investors to ensure proper transparency, and thus the investors will be able to make informed decisions. अगर सपोज वो इंफॉर्मेशन वो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट ही नहीं की है, उन लोग अंदर ही कुछ तो स्कैम कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स उस चीज का उनको क्या मिलेगा, नेगेटिव इफेक्ट देखने मिलेगा. यस और नो, यस और नो क्लास. ओके. Now, assessing, also see, assess whether the company's financial statements it is showing annual growth. जो consumers होते हैं उनको assess करने में easy होगा when they are telling and disclosing important information. When I'm talking about employees, employees में internal decision making लोगों को aware करना, following proper chain of command. There is no omissions of important information. Paying attention to the quality footnotes and disclosures. जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं वो कंपनी क्या कर रही है, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर रही है. नाउ दिस ट्रांसपेरेंसी विल हेल्प इट टू जनरेट कंज्यूमर्स ट्रस्ट, generate investors trust, which in turn will help them to create a good brand image. उनका जो कंपनी का ब्रांड इमेज है, बिजनेस का इमेज है, वो स्ट्रांगली क्रिएट कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर दिखा रही है. एनीबडी वुड नेवर लाइक टू इन्वेस्ट इन अ शेडी बिजनेस बिकॉज आपके पास उसका प्रॉपर इन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा. अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है विच मीन्स दैट आपका रिस्क क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. आपका रिस्क इंक्रीज नहीं होना चाहिए. सो दैट्स द रीजन द कंपनीज विच आर showing you more information and factual information, they are not window dressing their accountings. ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. a good corporate governance will ensure that ऐसा कुछ नहीं हो रहा है and everything is being done following proper procedures. That is about the third part for today, that is transparency and disclosure. The next is executive compensation. Now, what is executive compensation? Uh, Understand that a companies executive मतलब of course जो आपके काम करते हैं लोग वहाँ पे excessive compensation या misaligned incentive can indicate poor governance. जो executives काम करते हैं उनका एक्सेसिव मतलब कम काम पे आप ज्यादा रिवॉर्ड्स दे रहे हो, या एकदम मिनिमम मतलब कि आपने उनके एफर्ट्स को प्रॉपरली रिवॉर्ड नहीं किया है. आपका इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है, जो प्रमोशन स्ट्रक्चर है, इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो कंपेंसेशन ओवर ईयर मीन्स द पे विच यू गिव देम. जस्ट अंडरस्टैंड दैट compensating executives means involve giving them payment. Now that payment can be in terms of salary, it can be in terms of bonuses, it can be in terms of other rewards, it can be in terms of promotion. So ensuring that internal management में जो corporate governance का structure है वो proper है. If it is misaligned, if it is not working properly, it indicates poor governance. ये क्या indicate करता है? Poor governance. And thus इसका मतलब कि वहाँ the people in the organization or the people in the company or business are all keeping their individual interest
above the company's interest. All of them are keeping their individual interest above the company's interest. If you people remember, there is a very important principle of management. उसमें important आता है subordination of individual interest टू ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट. आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट हमेशा नीचे होना चाहिए एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट. सो इफ दैट इज नॉट देयर, अगेन इट विल क्रिएट or it will motivate people to selfishly think only about themselves rather than the whole company, or rather than investing in the growth of the company. वो सिर्फ आ रहे हैं और काम करके जा रहे हैं. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि जो टॉप मैनेजमेंट होती है कंपनी की, वो इंश्योर कर रही है कि वो अपने स्टेक होल्डर्स को, एम्प्लॉयज को, अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स है उनको दे रही है कि वो कंपनीज के 100% देने के लिए रेडी है, वो उतना एफर्ट्स डालने के लिए रेडी है. So that when they will put this much of effort, the result or the output which they'll generate will be so good and will be so helpful. uh, Ensuring creation in value of the shareholders and creation in value of the business as well. So कंपनी प्रॉपरली सब चीज़ों को फॉलो कर रही है, ये इंश्योर करना. उनके इंटरनल मैनेजमेंट जो कंपेंसेशन पॉलिसीज है, वो कंपेंसेशन पॉलिसी इज अपग्रेडेड, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है. व्हेन देयर इज अ नीड, देयर आर चेंजेस टू बी डन टू अडेप्ट टू द न्यू सिचुएशन. Are you people understanding? Many times, what happens is when there are companies who give their executives high sales target, they give them high work pressure, ensuring not taking into accountability that what are the workings are, is the target given feasible enough to be achieved. These all things are leading employees to leave the business, being them depressed. So वो क्या करते हैं, सिर्फ they are just showing that they are working, not putting in an actual effort for the growth of the business. They are just working for the sake of employment rather than putting in the actual knowledge and resources, using the resource to the optimum. Is the fourth point clear? That is executive compensation. The next is risk management. Of course, when you are running a business, ये जो मैंने बोला, whatever I said अभी तक, we've covered 4 points, that is decision making, compensation, board of directors. These all things are aligned with one single aim: to run the business and have profitability in long term. Correct. Now, wrong business decisions can never lead that achieving of these objectives. Similarly, what if the risk management of the business is not strong? What if the business is not well equipped to outgrow a particular risk? What if a small mishap can create a havoc in the business, leading to failure of the business? ऐसा सिचुएशन है कि कंपनी बिल्कुल भी तैयार नहीं है to suffer the risk, to overback or overcome the risk once it is subsided. तो बहुत प्रॉब्लम होती है. It is important. A good corporate governance is when they have a strong risk management team where they are evaluating companies' policies and procedures to identify uh, the risk, to assess the risk, and definitely mitigate the risk. वो क्या करेंगे, तो उनके पास एक ऐसा टीम होना चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या किसी भी अदर चीज़ों से रिलेटेड रिस्क को क्या कर सके. पहली बात तो आइडेंटिफाई कर पाना, बीइंग विजिलेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट इवन व्हेन द रिस्क हैज कॉज्ड अ लॉन्ग टर्म डैमेज, उससे बहुत पहले आपने उस रिस्क को क्या किया, आइडेंटिफाई किया. सेकेंड, असेसिंग द रिस्क. व्हाट इज असेसिंग द रिस्क? असेसिंग द रिस्क मतलब checking what impact or how much impact will it or can it have on the business. Not every risk can impact our business. कल को अगर change in there's a business related to, let's say, business related to pharmaceuticals, so change in the taxation policy
of drugs will have an impact on pharmaceutical business, but change in the policies of I'll say let's say there's a change in the policies of farming or agricultural, तो वहाँ पे उसको इतना ज़्यादा इफेक्ट शायद नहीं पड़ेगा. तो existence of risk, then identifying how much effect will that risk have on the stock or goods, then also checking कि वो कितना ज्यादा उसको डैमेज कर सकता है, दैट इज असेसिंग. नेक्स्ट इज taking steps to mitigate or nullify or avoid the risk. There are two things when a risk happens. We usually say either you can avoid either you can avoid the risk, or what you can do is you can accept and try to lessen the effect of the risk. या तो अगर वो अवॉइड हो सकता है तो आप पहले से उसके स्टेप्स लेके उस रिस्क को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे. बट व्हाट इफ इट इज अ सिस्टमैटिक रिस्क, अ रिस्क विच विल अफेक्ट ओवरऑल बिजनेस. सिस्टमैटिक रिस्क मतलब वो पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है, आपके बिजनेस को नहीं, पूरे मार्केट को अफेक्ट करेगा. जैसे इन्फ्लेशन हो गया, जैसे कोविड पीरियड में कोई पर्टिकुलर पेंडेमिक हो गया, वॉर हो गया, देयर इज अ चेंज इन द एक्सचेंज रेट. तो एक्सचेंज रेट में चेंज आया तो सारे एक्सपोर्ट बिजनेस को फर्क पड़ेगा, राइट. इट इज नॉट पर्टिकुलर सेक्टर को ही फर्क पड़ेगा. तो ये रिस्क कौन से टाइप के रिस्क है, उसके अकॉर्डिंग क्या वो सिर्फ मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा. अगर सिर्फ मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है तो व्हाट स्टेप्स एंड डिसीजंस कैन बी टेकन in order to mitigate that risk. But what if it is a systematic risk? It means that it will affect the whole market and basically it is unavoidable. तो उस केस में आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो. तो what is the second best option to ensure that the damage it causes it is minimum. उसका जो इफेक्ट है उसको मिनिमम तक रखना. यू कैन डू दैट, और दैट शुड बी योर अप्रोच व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्क मिटिगेशन. एंड दैट इज व्हाट अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज, कि आप क्या कर रहे हो, अपने रिस्क मैनेजमेंट कमिटी रेगुलरली क्या कर रही है, इन थ्रेट्स को चेक कर रही है. अब ये थ्रेट्स कैसे हो सकते हैं, व्हाट अबाउट इफ इट इज अ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, आपके जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है उसका कोई थ्रेट है. व्हाट इफ इट इज अ रेगुलेटरी थ्रेट, लीगल चेंजेस रिलेटेड कोई थ्रेट है. या सप्लाई चेन, देयर इज अ सप्लायर हु गिव्स यू रॉ मटेरियल and suddenly that supplier is backing out. You didn't had any previous contracts as such, or after the end of a particular contract, now that supplier is backing off to provide you the new raw material. What will be your approach? Have you back does the company has backups, or was the company prepared for such a situation? क्योंकि अगर ऐसा हुआ आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो क्या होगा, आपका पूरा प्रोडक्शन रुक सकता है. प्रोडक्शन रुकेगा तो आपको लाख्स और करोड़ का नुकसान हो सकता है इन अ डे. आई एम नॉट टॉकिंग 2 दिन भी प्रोडक्शन रुका तो वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उतने दिन की आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, वेस्ट होगी इन मशीन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्रीज एंड प्लांट्स, इवन अ डे विल मेक अ डिफरेंस ऑफ लैक्स एंड क्रोर्स. सो उस केस में आपकी पॉलिसीज क्या पहले से प्रिपेयर है. तो सप्लाई चेन में कोई डिसरप्शन हो रहा है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उन्होंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, इस तरीके से it is important that the good corporate governance is when the risk management committee is working very effectively towards again identifying, assessing and mitigating risk. By evaluating all these points, what we can do is the investors can gain invaluable insights मतलब information. जब आप ये सब चीज़ों को क्या करोगे, एनालिसिस करोगे इसका, तो इस एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि कंपनी की एबिलिटी टू व्हाट टू withstand challenges during case of emergencies, during case of challenges, will the company be able to uh, take sound decisions. Now what are sound decisions? Correct decisions, well thought decisions, those are sound decisions. क्या वो sound decisions ले सकते हैं? If not, उनके क्या capability है, उनका वो market में कहाँ पे withstand करते हैं अपने decision making को लेके. इससे उनका फ्यूचर स्टेबिलिटी आप डिसाइड कर सकते हो एज अ इन्वेस्टर. एज अ इन्वेस्टर आप क्या कर सकते हो, उसको और अच्छे से स्टडी कर सकते हो.
Uh, I paused myself for a minute because I was just searching this case study for you people. Uh, I don't know how many of you have heard of this case study, but important case study था एक regarding corporate governance. Aeron Corporation. I don't know how many of you have heard of this Aeron. ये एक स्कैम था, एरॉन का स्कैम था. नाउ वो द स्कैम वाज सच दैट, अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ कंपनी, अमेरिकाज मोस्ट इनोवेटिव कंपनी इन 2000s में. बैक स्टार्टिंग ऑफ द 2000s it was considered one of the most important company, but the company collapsed due to the accounting fraud and unethical practices. What happened na, the CEO, what was his name, Jeffrey, the CEO Jeffrey, he manipulated फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो डिस्प्ले कर रहे थे उसको उन्होंने मैनिपुलेट किया टू कंसील देयर लॉसेस. उनका जो लॉस वो सफर कर रहे थे उस लॉसेस को कंसील किया बाय मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स एंड अपने आप को प्रॉफिटेबल दिखाया. व्हाट हैपेंस इज, उन एडिशनली जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो प्रॉपरली इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए. एंड व्हेन लेटर ऑन the scam was disclosed, the company suffered of course huge, उनको पूरा कंपनी का कोलैप्स हुआ, पूरा मार्केट कोलैप्स हुआ था उनका. उनका स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे. देयर वर लीगल एक्शंस टेकन. सो इस तरीके से व्हेन दिस हैपेंस व्हेन देयर इज नो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जब उनकी मैनेजमेंट टीम प्रॉपर काम नहीं कर रही है. ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स को भी बहुत नुकसान हुआ था. So it is important कि all these things which we are taking, जितने भी rules और guidelines है, all those rules and guidelines when followed properly, nobody is involved in any fraudulent activities, nobody is involved in doing wrong things. वो क्या आपको help करता है? So that helps you to have or maintain good corporate governance. Is it clear, class? Are you understanding what is corporate governance and why is it important to assess corporate governance? Because that will help you to understand the working culture of the company and in turn will help you to understand कि कल को अगर कोई challenges आए, market में कोई instability आए, तो will the company be able to withstand that or will it fail during that process? क्योंकि अगर corporate governance अच्छा हुआ तो वो challenges को meet कर पाएगी. अगर corporate governance खराब हुआ तो वो क्या करेगी, during that challenge or risk it will fail and thus giving a loss for the investors. Tell me class, is it clear? Is this part of the topic clear? Students react. Others as well, please. Do not make me call out names. If you people are here for attendance, behave that you people are in the class और आप सुन रहे हो वैसे ही act करो. तो at least react with a emoji. Priyanshi, Parth, Arsh. Okay. So with this topic is done. There is another thing related to the same topic, that is role of independent directors in maintaining corporate governance. Now these independent directors are part of board of directors. Understand that. Students, is the new page visible?
Students, is the new page visible? Will some of you react and tell me? I've shared a new slide. Is it visible? Yes, okay, thank you. So now this is role of independent directors. There are certain head points given. First thing first, who are independent directors? Class, tell me who are independent directors. See, in board of directors, there are of course people who are major shareholders. Then there are people who are related to those. उनके family हो सकते हैं, friends हो सकते हैं, or people with great expertise in the business. But then it is mandatory. Okay, according to Indian Companies Act, independent directors are part of board of directors. Now in terms of what, they are non-executive in sense, not involved in day to day management. दे आर नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डू मैनेजमेंट, वो रोज का डिसीजन मेकिंग और इसमें नहीं आते हैं. ऑल्सो दे हैव नो significant relationship with whom, with the business or family members of the business. वो business के साथ कोई tie up नहीं है, उनको कोई profit से लेना देना नहीं है, क्योंकि many a times shareholders to generate high profit, they may be ignorant of the other factors involved. But if it is an independent directors where he is nowhere related with the financial aspect of the business, वो unbiased and practical decision making में क्या करते हैं, help करते हैं. That is no one but a independent directors. Of course, then these independent directors have a set of responsibilities to be fulfilled. Hmm. So the first point is oversight of management. Now, what is oversight of management? पूरे management का overlook करना, overlooking, making or taking in an effort to check in the regular, check in the things कि business overall तरीके से काम day to day में they are not getting involved, but ensuring that there is an effective oversight and governance, they are ensuring that the responsibilities, that the interest of all the stakeholders are properly upheld and taken into consideration, in not just sitting for board meetings, but having the task of uh, ensuring the corporate governance के जो भी rules बन रहे, those are implemented properly. The next is प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स. आपके जो शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स है, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना. It is one of the primary responsibilities of independent directors to act in the best interest of the investors. That means taking decisions that prioritizes long-term benefits and financial well-being of the shareholders. Long term में उनकी value creation हो रही है, उनका wealth increase हो रहा है. That is one of the important responsibility.
They will carefully evaluate investment strategies. जो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज है, जो डिसीजन हो रहे हैं, उन डिसीजंस को और ज़्यादा carefully they will look into to ensure what to ensure that the interest of investors that is protected, to ensure that the fund, whatever fund is given to them, the fund is performed well, is used well, वो सारी चीजों को ensure करना. Then exercising, providing expertise. Next क्या है? Providing expertise. तो providing expertise मतलब since these board of directors, they are supposed to be with someone with a high profile. Now this profile in the sense is उनका जो background होना चाहिए वो work area में, corporate area में बहुत ज़्यादा strong होना चाहिए, with years of experience, with a knowledge or knack of how to do things or how to get things done in a proper way, to ensure that every rules, regulations, and everything is being properly. If there is a certain aspect which is being ignored or missed by the company, so pinpointing that with the help of the expertise which they are offering. देन दे मस्ट ऑल्सो असेस कि रिस्क क्या है, रिस्क कितना सफ़र कर रहे हैं, वो रिस्क को मैनेज करने के लिए. इट मीन्स दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डेफिनेटली बी वर्किंग ऑल दीज इन थिंग्स, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो उनका भी काम सेम है. बट व्हाट हैपेंस इज सिंस दे आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द internal pressure. I would say कि internal pressure of making a certain particular decision is not on them, so they may take decisions which are good. What is the next point? Ma'am, hello, ma'am. Ma'am, I'm not able to see the screen. Should I leave and join again? Yes, you may. Are others able to see it? Just tell me that. Okay, Yes, great. ma'am. So it means that it is a problem on your end. Just rejoin. I'll add you in the meeting. Okay. Also understand that today I'll be just taking 1 hour session. Huh? So it means that in next 15-20 minutes after completing this topic, I'll wind up today's session. Uh, so we'll continue whatever 4 5 points are left. Ensuring board's independence. Now, what is board independence? There are decisions which board of directors take. Now these decisions are not something which is on very small or day to day decisions like kitna quantity or whatever, what is the production, deciding new product line, deciding kitni sponsorships आएंगी, deciding is the business willing to take a loan to enhance or expand their business. All these decisions are taken by board of directors. So
Sorry, class, I had to mute myself for a personal work. So we were discussing board independence. Since these are so decisions which affect the business in long term, starting a new product line, ensuring कि कहाँ से capital structure होगा, are they going for an IPO or not, इतने big level के decisions जो board of directors लेते हैं, अगर उसमें independence नहीं है, if those business are biased or favored toward one particular party, what if those business decisions are कोई एक particular है, particular person in the business, what if he is doing certain fraudulent activities, what if those decisions or those proper evaluation nahi ho raha hai. The next point see over here, it is evaluating executive performance. Properly वो जो board of directors है या उनके नीचे जो managers है, वो properly अपने काम को execute कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो ensure करेंगे कि governance properly follow हो रहा है या नहीं. तो अगर top level chain में ही जो decisions है, those decisions are not through proper I'll say the aim of those decisions, what if that is only not proper, तो जो effect होगा वो भी proper नहीं होगा. What if to increase their profit the company is going to adopt a fraudulent way, तो हो सकता है उसको अपना profit दिख रहा है इसलिए is ready to do something which is not legally allowed. But एक independent director का काम है कि वो उस चीज को रोके, उसका जो ओपिनियन होगा वो अनबायस्ड होगा, तो उस अनबायस्ड ओपिनियन और डिसीजन मेकिंग को वो यूज करके इंश्योर करे कि कंपनी इज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, neither wrong in terms of executives, nor wrong to the customers, nor wrong in following employment environmental policies, किसी भी चीज को नहीं. ओके. सो द ensuring that उस चीज को दिमाग में रखना और उसको फॉलो करना, दैट इज इम्पोर्टेंट. ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या कर सकता है, तो वो इंश्योर कर सकता है कि जो चीजें बोली जा रही है, जो चीजें राइट है, वो राइटली इम्प्लीमेंट हो रही है. Ensuring board diversity. Now what is board diversity? Diversity, as you know, different चीज है, तो अगर conflicts है, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे सॉरी, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज एंड नॉलेज, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स है वो डाइवर्सिटी नॉलेज और एक्सपर्टीज लेके आ रहे हैं, अलग अलग एरियाज ऑफ इंटरेस्ट कवर हो रहे हैं. कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर अराइज हो रहा है तो उसको म्यूचुअली मैनेज करना, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स को डाई डाउन करना, उसको शांत कराना, टू एंश्योर दैट एवरीबडी इज वर्किंग टूवर्ड्स अ कॉमन गोल, एलिमिनेट करना, दैट इज इम्पोर्टेंट. ऑल्सो ensuring that is very important. Also understand this role of independent directors. Also we are, because we are setting it separately, it is such that otherwise कंपनी में सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर डेवलप करे, बिकॉज ओनली देन इन लॉन्ग टर्म दे विल बी एबल टू जनरेट प्रॉफिट. एज एन इन्वेस्टर वाई इज इट इम्पोर्टेंट? एज एन इन्वेस्टर आपको पता चलेगा कि वो कंपनी को, जैसे बहुत सारी कंपनीज है जो अपने वर्किंग कल्चर के लिए नोन है, जो हम बोलते हैं ब्लू चिप कंपनीज है, हम बोलते हैं बिग फर्म्स है. वो क्यों बिग फर्म्स है? क्योंकि डाउन द लाइन दे हैव taken decisions which affected the business as well as the consumers in a positive way. And then there are companies which are known for their scams and frauds and no proper governance. अब मैं यस बैंक के स्कैम की बात करूं या पंजाब नेशनल बैंक का जो आपको बीच में फ्रॉड सुने आया था, what happens is after that it, first thing, the reason for the fraud is again not a proper governance structure. Controlling or managing जो टीम थी उसने क्योंकि see, there is never a case that only one person in a company will be involved in a particular fraud. Some of the people are either not being, are either helping the person,
और द सेकेंड केस भी दे आर बीइंग इग्नोरेंट इनफ कि वो सामने वाला इतना फ्रॉड करके ले रहा है। तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि एवरी पर्सन इज बीइंग सेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर दैट देर इज अ प्रॉपर गवर्नेंस। देन the second thing is, while everyone is working on it, the top management of the company is ensuring that the policies which they make are such that it is easier for people to follow or make good corporate governance। उनके एम्प्लॉयज के लिए वो चीज़ ईजी होनी चाहिए, उनके जो डिसीजन है वो सबको कंसिडरेशन में लेके होने चाहिए। हमने टाटा एज अ कंपनी वी सी, वी ऑलवेज से दैट इट हैज अ गुड वर्किंग, उसका जो ब्रांड इमेज है एज अ कॉर्पोरेट is very good। Then we say work, there are many companies who are not known for its working environment। लोग बोलते हैं नहीं ये कंपनी तो कभी ज्वाइन नहीं करना बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर, बिकॉज ऑफ नो गुड कल्चर, वर्किंग कल्चर। सो इस तरीके से जो गवर्नेंस होता है वही इन चीजों को डिटरमाइन करता है। अगर रूलिंग गाइडलाइंस है वो प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स कभी क्रिएट नहीं होंगी। ये प्रॉब्लम्स कब क्रिएट होते हैं? व्हेन देयर इज नो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्हेन देयर इज नो प्रॉपर फॉलोइंग ऑफ चेन ऑफ कमांड। एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लुक इनटू दिस साइड ऑफ द बिजनेस? बिकॉज उसका जो रनिंग है वो इसी पे डिपेंड करता है, राइट? सो इसीलिए वाइल वी आर डूइंग कंपनी एनालिसिस, हमने पहले क्या किया, तो व्हाट इज बिजनेस, उसका मॉडल स्टडी किया। देन वी डिसाइडेड टू लुक इनटू, उसका स्वॉट एनालिसिस किया। स्वॉट एनालिसिस से हमको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चला, उसका कौन सी चीजें अच्छी है कौन सी चीजें खराब है। देन वी विल लुक इनटू द इंटरनल मैनेजमेंट, दैट इज उसका गवर्नेंस, कंपनी की पॉलिसीज क्या है, वो अपने एम्प्लॉयज को, अपने कस्टमर्स को लॉन्ग पास्ट में उसके डिसीजन मेकिंग कैसे रही है, उस डिसीजन मेकिंग का उसकी कंपनी के ग्रोथ पे। सपोज पास्ट में कंपनी ने कोई पर्टिकुलर अनाउंसमेंट किया, उससे उसके शेयर प्राइस ऊपर गए थे या नीचे गए थे, इस चीजों को आप स्टडी करके पता कर सकते हो कि कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक कैसा है। क्लियर? Okay, so with this, we are done with the topic of assessing management, quality management, and of course, corporate governance. Also, understanding the role of independent directors in maintaining corporate governance. So, for today, I'll wind up. It was just a 1 hour session for today. Tomorrow again, I'm thinking of taking just 1 hour sessions from now on, so that it is neither hectic for you people nor is it overburdening for me as well. And I'm thinking of keeping the time as 4 to 5 for all the days now. Hardly 3 or 4 lectures will be more, 3 to 4 lectures, not more than that. And after that, since this is your last unit, आपका portion का winding up हो जाएगा, and soon your exams will be scheduled. Okay? Is there anybody having any doubt as such? If you people have any doubt, do ask. Is anybody having any doubt? If not, then do a thumbs up so I'll understand and we can end the meeting. Okay, so I hope the topic was clear for today. Uh, have a good day ahead. Bye, students. You are allowed to leave the meeting.